connected through the online medium. Shri Manoj Sharda ji, Professor Neetu M. Shukla, Professor Harendra Singh Jodha, we welcome you. I further take privilege to introduce Shri Manoj Sharda ji. Sir has completed his schooling and graduation from Ajmer and chartered accountancy course at Kolkata and pursued his career in the same group for 2 years at Mumbai. He has been a great industrialist and agriculturist. Presently, there are 5 biscuit and snack factories working under him. He is also involved in fields like hospitality, horticulture, floriculture through the last 25 years. You are invited, sir, for your address to the seminar. Thank you, ma'am. As I am working in industry from last many years, but my industry is a MSME industry. Academia has done great job in last decades for preparing students for joining the big corporates at all levels. Also, after completing their higher education, students are prepared for global exposure. But I represent MSME industry because what we are doing, we are a content manufacturer. So in last 40 years experience, I have found that MSME industry, I felt that for MSME, where are low education people are required, much thought is to be given by the academia as well as industry. So how to prepare it? At present, generally we have to internally prepare them for our senior jobs. Because majority of students after completion of studies, they like to join big companies and they also like to have a desk work. But in MSME, requirement is for floor level persons, which industry has to develop internally. This problem, I think, if much thought will be given, it maybe get better solutions. And MSME industry requirement is mainly for junior technical persons, supervisors, managers, which have to give more time on the floors because this needs continuous attention, especially we are in a food industry, which needs a continuous attentions. Otherwise, we can't prepare because in India that much development is not happened. All machines they are automatic, but actually they are not automatic. They will work according to their needs. We have to control them. In agriculture, also tourism, also I found that last 20 years I am involved in that activities. With same problem is the persons who wants to join small enterprises, they are not available. So I think that if academia think about it and do some seminars like this happening, so might better solutions come which will be helpful to all small MSME and hotels and others industries. I am thankful to Central Academy for giving me this opportunity to address. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपने बहुमूल्य वचनों से हम सभी को प्रेरित किया और हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हमारे साथ एमईटी यूनिवर्सिटी से श्री नीतू एम शुक्ला मैम एमए इन इंग्लिश एंड एमएड इन गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैम 2 बार यूजीसी नेट क्लियर हैं। वर्तमान में पिछले 15 वर्षों से एमईटी यूनिवर्सिटी के एजुकेशनल डिपार्टमेंट में सीनियर फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं। मैम ने कई नेशनल लेवल व एनसीईआरटी से रिलेटेड सेमिनार व वर्कशॉप में रिसोर्स पर्सन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी व कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया है। मैम की यूजी व पीजी लेवल की कई बुक्स का प्रकाशन भी हो चुका है।
मैम पीएचडी व एमएड की रजिस्टर्ड गाइड भी हैं। मैम के कई पेपर नेशनल व इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। मैम थाईलैंड की प्रिंस सोकला यूनिवर्सिटी में भी एज अ स्पीकर लेक्चर दे चुके हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ मैम नीतू एम शुक्ला मैम को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप मेरी आवाज सुनाई दे रही है, साफ है? यस मैम। ठीक है। तो इट इज रियली अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि अपना आज का जो आपका प्लेटफॉर्म है इस कॉन्फ्रेंस का, उस पर मेरे गुरुजन हैं और उन लोगों के इतने समय बाद मैं पूरे लेक्चर सुन पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने लिया है, बहुत ही अच्छी थीम है इंडस्ट्री और एकेडमिया की। इसका इंटरफेस बहुत ज़रूरी है, हाउ टू लिंक द टू। The whole story revolves around that only, because academia is preparing students for द इंडस्ट्री ओनली। और जैसे प्रोफेसर राजपूत साहब ने सुबह मॉर्निंग में बोला था कि वहीं से हमारा सोशल चेंज शुरू होता है। अगर हम स्टूडेंट्स सही प्रिपेयर करेंगे, दे विल गो टू द इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी। So I have acquired a small experience in this area of teacher education. So when I was looking at this theme, I just thought I'll just share my experiences with you related to teacher education institution. क्योंकि अल्टीमेटली जब भी हम बात करते हैं इंडस्ट्री एकेडमिया के कनेक्ट की या हम सोशल चेंज की बात करते हैं, द onus comes back to the teacher education institution, that the teacher educators are not being prepared well, they are not being shaped well, hence the teachers are not functioning properly, because of which the children and the students are not getting shaped properly, and then they are going back to the society in various processes, and something is going right and most of it is going wrong. So we are trying, we are all are here trying to uh, find out where are the loopholes and see how it can be plugged in timely in the most efficient manner, so that we can engage in national development in true sense of the word, and not just do surface education and do things just for the sake of it, which is happening in the contemporary world. Many a time we see it, and that's the problem that we are identifying. So I will be sharing my PPT so that my thoughts are more structured and organized. So please allow me to share. Do I have the sharing rights? Or I can just open my PPT and I'll start discussing from there itself. So the theme is strengthening of industry and academia post NEP 2020. And here one quotation which I came across, which I found very relevant, is it's a quotation by Klaus Klutz, a German music composer, and it said that, as always in a musical collaboration, one has to like each other. As simple as that. So industry has to like academia and academia has to like the industry. There should be no competition between the two. Rather, both of them should be collaborating to churn out the best product for the society. So there needs to be a symbiotic relationship, which I have mentioned, that a symbiotic relationship which is mutually beneficial and working towards the common goal of transformation of person should be there. So when we are looking at the teacher education institution, academia is the higher education institution, we have the teacher education and industry. So in academia, we have the graduates, the B.Ed and BLed and all other graduate programs that we have. And in industry, we have our interns who are going for internship in various schools and NGOs and other organizations. Now, as a teacher educator, I feel we are experiencing both things, because when we are teaching and we are shaping our B.Ed interns, we are a part of the academia, teacher educators, and at the same time, when we have our young, PhDs and MEd graduates with NET, when they join us in the profession, we become the education industry. We are the employers at that time. So it's a twin role that we are experiencing.
So, first I'll take up the academia role. So, as an academic person, I am the in charge of school internship program also, and that's one major area and space that has been provided to us by our, program, where we can establish this connect with the school industry, and that is through school internship. Right. So we have to place our student teachers in the schools for a specified duration of time so that they get a feel of the various processes that are going on in the school. What kind of culture is there in the school? What is the role of different people who are there in the school? What are their responsibilities? What kind of skill sets are required? What kind of attitude is required? What kind of professional ethics and behavior is required from them? So first is that we have to engage in this school internship program. So we need as academic institutions, if I have to, approach the industry in this particular endeavor, we are looking forward to industry mentors who are genuinely involved and interested in training and shaping teachers of good quality. Because it's a huge challenge for teacher education institutions to get permission from schools for internship, because schools are like autonomous organizations. They have their own responsibilities, accountabilities, that they hesitate many a time. They don't want to allow our interns to be there in the school for a sufficient duration of time. So it becomes a real tough task for us. I hope सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है. Am I audible? Yes, yes, ma'am. Okay. So, this is a major challenge that we are facing as academia, teacher education institution, that the school teacher education institution, they are still working in isolation. Those schools who have that kind of academic leadership, who understand this relationship and its importance, they are, ready to give us time, space, and they really deal with our interns in the best possible manner. And no doubt, when our interns come out of those schools, they are a changed person. The personality has changed, the values, attitudes, everything gets shaped. But the places where they are not getting that academic leadership, where they are being just taken as, additional human resource which is available for completion of syllabus, for completion and conduct of various academic, non-academic activities, preparing of reports, and doing all those kind of jobs because they have less number of teachers. Over there, our interns, they get a wrong orientation, or you can say they get disoriented about the entire teaching profession. I believe that's where the main problem starts. When the academic leadership in school is not taking sincerely their role in teacher preparation, the problem starts from there. Right. So I believe that some mechanism should be there, that the school industry uh, has some kind of accountability, that okay, in a year they have to provide internship to these many interns. Some kind of licensing, that it should be an obligatory thing for them. Abhi to it's a kind of choice. Many people, they say yes, others say no. Right. So but if it becomes a compulsory thing for them, then they will be more oriented towards planning out what all they would want the interns to do. Right away, what happens, our interns in some schools where they go, they're immediately given syllabus. Complete the syllabus in this 1 month. Now, when our interns are trying out innovative things, because as theory we have told them that, see, when you're teaching this concept, this is what you have to do. You have to follow a particular lesson plan format. You have to have some initiative activities where children, they get involved, and then you proceed with the explore, enrich, excel, and all those parts of the lesson plan. But when they go in the industry for internship, they get totally disoriented. They are told you have to complete the syllabus, you have to do this, you have to do that. So it becomes a very big mismatch, and that's where I believe one problem of shaping attitudes, right, that becomes problematic, because they have to fulfill the requirement of the teacher education institution. You have to complete the number of lesson plans, you have to make those lesson plans, and here the industry is demanding something else. So something, if it can be worked out in some way, that the school industry is more responsive and they are more readily available for sparing their time, then it will be really helpful.
Now the second thing is again about academic leadership only. There was in fact two experiences I will share. Academic leadership is really good. If it is really good, it can change the student teachers perspective about teaching. So there was one school where our interns they were placed, and the principal over there, she shared some of the best practices which they are doing in the school, right? Because schools have their own limitations. Okay, so one of the limitation like the schools they were facing, that particular school was facing, was that the children they were coming with very heavy bag, because of all the books and the timetable and requirement. So what the principal and teacher they had worked out a mechanism कि जो बच्चे साथ साथ बैठते थे उनको alternate days पर बता दिया गया था कि मंडे को ये बच्चा इंग्लिश की लाएगा बुक, मैथ्स की नहीं लेकर आएगा, अगले दिन दूसरा बच्चा लेकर आएगा, अगले दिन कोई और बच्चा लेकर आएगा। तो इससे क्या हुआ कि एक बच्चा कम बुक्स कैरी कर रहा था हर दिन, और वो शेयरिंग कर रहे थे। जब वो क्लास में पढ़ते थे तो एक ही बुक दो बच्चे शेयर कर रहे हैं, जिनमें से एक बच्चा एक दिन ला रहा है, दूसरा बच्चा दूसरे दिन ला रहा है। सो द बैग का जो ओवरलोडिंग वाला बर्डन का एक प्रॉब्लम था स्टूडेंट्स के साथ, दैट गॉट रिजॉल्व। सेकेंडली द वैल्यू ऑफ शेयरिंग that was inculcated somewhere or the other in the in the new world that we are moving towards. We are all becoming very individualistic, सबके पास अपनी चीज होनी चाहिए, so we are losing out on that sharing thing. So this principal, she shared those practices with the intern that this is how we resolve some of the problems that we are facing. So such kind of experience sharing by the academic leadership in the schools will definitely help in shaping the behavior, attitude, and professional, ethics of the teachers, the interns. So some teachers are doing it, some are not doing it. So if it can be again worked out that okay, the academic leadership has to maybe 1 hour, so 1 hour in a particular week they will all sit together and they will try to share some of the best practices, and that can be written somewhere or documented somewhere. So that kind of involvement and engagement by the industry will help our interns a lot. Another is that okay, this I have discussed in the curricular thing, that yes, the overload is coming now. So we are looking forward to industry mentors who will be able to spare their valuable time to inspire our interns with their experience sharing, discuss critical problems faced by them in their career and their course of action, and scheme for decision making. Because this is what these are like, tested knowledge. It cannot be taught in a particular class how you have to engage in decision making. Only a principal who has been through that process, where she experienced a particular problem and she tried to resolve it, she can give those insights to the intern that what you should do, how you should follow, what should be your process of decision making in such cases. So such kind of dialogues with the principal during the school internship time, that should be encouraged, and space should be given by the industry mentors during the internship time. Another way in which the school industry can help associate with our academia is engage in skill development through enrichment workshops. So whatever latest, like during the pandemic time, what happened? Immediately the schools had to switch over to the online mode. Okay, so now the schools were the first place which were there to respond to this situation. They immediately, came up with the apps and various platforms where this interface of online meetings could be, synchronous mode or asynchronous mode. So such things when they are arriving in the schools at an earlier stage, they come to our teacher education institutions a little later. So if there could be again a mechanism where the industry people they are coming and in they are coming and orienting the interns, and they are interacting with the teacher education institution in improving the curriculum, in improving the experiences that is being given to the interns, that will also help in bringing good quality of teachers. Next is exemplify professional ethics and standards of behavior in practice. Uh, we all know that yes, there is a depletion, um, or there is the conduct of teachers in the schools. Many people are saying that yes, it's not really worthy, whatever it may be. So we are actually lacking in inspiring personalities.
So what I feel is that again a mechanism should be there that inspiring people are get they should be rewarded and acknowledged in a very timely manner. Sometimes what happens that people who are doing the genuine groundwork, they are the ones who are never able to come and uh, uh, come to the forefront. वो बस काम करते रह जाते हैं पीछे. तो जो इंटर्न्स हैं उन लोगों को जो मॉडल्स मिलते हैं देखने के लिए, वो मॉडल्स मिलते हैं जो अ, शायद इतना उन्होंने ग्राउंड वर्क नहीं किया है. तो they start thinking in their mind that what is working, what will bring success to them. So ऐसी success उनके examples उनके सामने ना आए, awards, acknowledgement, all these things should be done in a more prompt manner for teachers who are doing good work, so that our interns, our teacher education industry gets the right model to be emulated by the interns. So next is provide feedback on curriculum. This is something that we have been engaging in at Amity University. Whenever we send our students for internship, whichever schools we have approached and collaborated for internship, we take their feedback. Once the in between the internship, we take their feedback as to what kind of improvements are suggested by you for improving the course curriculum of the B.Ed program or M.Ed program, whoever, whichever intern is going. And towards the end also we take their feedback and we try to incorporate those changes, those suggestions in our syllabus as and when required during the renewal process that takes place, the curriculum development that takes place. Next is this concept that is being introduced, the professors of practice. So it's a very good idea because I believe when we have professor of practice in our, academia, it should help us in connecting with the industry mentors in the most amicable and meaningful manner, because whenever academia is giving practical experiences to the students, we have to reach out to the industry. So such kind of professors of practice will definitely have their own connections and they have their own insights, so they will be able to connect the academia with the industry in the best possible manner and in the best planned manner, so that the outcomes are achieved in the most desirable manner. So we are okay. Then so this is what I feel, that as an academia we are looking forward to the industry. So another thing is that when we are sending our students for the internship in the industry, they should be accepted in a very wholehearted manner. Sometimes in some schools what happens, our student teachers, they don't get a proper space to sit and organize their work. So if the school industry has this kind of understanding that yes, every year they have to engage in facilitating the internship program of a teacher education institution, they will definitely chalk out a space for the interns. They will definitely chalk out some kind of academic environment will be made available to the interns, which will help them in shaping their understanding of the profession in the best possible manner. So specification of roles and responsibilities of interns would be better if they are prepared and they know that yes, they have to mentor them, because mentoring is a very it's a very beautiful term, a very meaningful term, because mentoring is something you're going to launch somebody in the field. So that's what I was just thinking, that if there could be some kind of certification or some kind of, a kind of reference letter that is issued to the interns, certified, or in which it is mentioned that yes, this was the industry person, whosoever the principal of the school was, along with the academic mentor, and they can mention that how this particular mentee has groomed himself or herself in this entire duration. So then this process will be it will get improved. Otherwise right now what is happening, only the product is being emphasized. Everybody gets a 3-month certification that yes, the internship was done in the school, but what kind of growth has taken place in the personality of the interns during the interaction that he or she was having with the mentor? Because when we have our mentors, we remember our school mentors, we remember our professors, right? They mentored us so well. Every professor taught us something or the other, and that gets reflected in our personality, in our behaviors, in our interactions, in our work.
So that kind of thing, if it can be worked out, it will again be a very positive thing. Then opportunity to engage in problem solving. This is another thing. If the industry, the school industry, during the internship phase, if they can provide opportunities to engage in problem solving through school-led action research. Right. So the school takes the initiative of taking action research in which the interns can be associated meaningfully. They can be given responsibilities, roles that, okay, this particular problem is what the school is facing. So we are trying to work out this particular solution and let us do it in this. So a collaborative action research guided by the school people, the industry people. Right. So even that experience will be a very useful one, and later on publication of such a report and sharing it with the teacher education institution can also be there. Now, as an industry member, what we are looking forward to our training institutions, we want a rich resource for fresh ideas and readiness to take up challenges. Many a time when we are getting our new incumbents, we find that they have their set mindset. They feel that, okay, this is what we can do, we will not do this, or I cannot do this, I've never done it before. So when they have this kind of attitude, they will not be able to function well in the industry. So the right kind of attitude needs to be nurtured in the academia. They should be having positive attitude, the right kind of mindset, that is the growth mindset should be there, that you want to grow, you want to make the place where you are working that should grow. You work as a team member, you collaborate not just at the local level but also at the global level. You are ready and interested in moving beyond what you have already done. Okay, so that kind of growth mindset is required. Then, as Professor Nagin Singh sir was also mentioning in the morning, willingness to adapt, willingness to change, willingness to explore, all these things should be there in the industry. So, when our student interns, when they went for internship this time, we found that in the initial 1 2 weeks, they were very tough for them because they said that, ma'am, we never expected teaching में इतना काम होता है और इतने वैरायटी ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं. दे वर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि स्कूल में दे विल गो, दे विल गेट समथिंग टू टीच, दे विल टीच एंड देन बाय 2 p.m. they will be at home. Right. So our academia should prepare our students for industriousness also, readiness and willingness to work hard, not just go in for shortcuts. Then next thing is, of course, they should not be short sighted that they are just working towards a degree, because that degree will not be able to fetch them a good job, or if they are able to get a good job, they will not be able to sustain themselves in that particular job for a longer time, or they will not be able to grow themselves up. They will not be able to professionally move to the next level if they are not prepared, and they are not far sighted, and they are not a visionary. They should be ready to collaborate. Excellent communication skills is required. Creativity, curiosity, problem solving attitude. Needless to say, all these skills are very much required for any intern, for any person who's going to the industry. Another thing is in the interpreting success, right? So success is many a time interpreted as getting a very high package, or you are getting placed in a very reputed organization, or you are in the best kind of work culture. So the reinterpretation of success needs to be there. Success should be something what Professor Rajput sir was saying in the morning: your achievement, your ability to attain the three matrices, right? That you are able to work towards the amalgamation of all these things: the body, mind, and spirit, self, society, nation, the three H: head, heart, and hand. So, if a person is able to achieve most of it, that should be success, and that's what the individual should be aspiring toward. It sounds very idealistic, but I believe teachers, and in fact every professional in the society, should aim for idealism to a small extent, so that we are able to have good processes and we are able to maintain quality in all the sectors. uh, Last point is that we want interns who are smart. Smart in the sense, the age old saying that we have simple living and high thinking. Okay, not just
make up things that okay, something looks very good, but the core is missing. That should not be there. A mindset that promotes growth, I've already mentioned. Then A stands for attitude that makes a difference to the world. So that attitude should be there, not the attitude that you are able to just complete a work, or do a particular submission, do a particular task. But how you are doing it, that should be very, very important and crucial. And how is that particular work of yours impacting, influencing other things, that should be also be considered. Righteous conduct in all conditions and challenges. This is something very easily said, but it's very tough, and it's very difficult to maintain. And to commit yourself to a particular profession, you have to develop this righteous conduct also. Shortcuts will be there, but many a time those shortcuts, they make you compromise on your values and ethics. So one should be able to withstand those temptations, and should know what is the right thing for me, what is the right thing for the society, and go ahead with it. Not just do something just because your peers are doing it, or that's the general norm that is happening. So that kind of grit, that kind of steadfastness, toughness in the mind, I believe it should also be there. Then only one would be able to maintain those professional ethics in our conduct. And tacit knowledge gained through experience. This is again, again, a lot of conferences, seminars, and so many times we've been talking about it, that pure knowledge, information is not knowledge. You have to experience the thing, so that you are able to pick up those those minute things, the tacit thing which is not expressed in the books or lines. It's something that you have to acquire only through experience. Only when you know how to prepare a laddu, you will be able to, you have done it, then only you will be able to prepare it. But you have just read about the steps and procedures of how to make a laddu, it will not come out to be the perfect laddu, right? So those kind of skills, attitude, and personality, the academia, the industry looks forward in the interns. So that's what my interpretation and my perspective on this theme was, that industria, academia, that interface, it can be managed well only when that involvement is there from both parties, that collaboration is really strong, and both are working towards the same national vision, the same vision, that yes, we have to go together, that harmony has to be there, and all the the constitutional values, national values, moral values, all the values are maintained, and they are depicted well in our behavior and conduct. So that's all from my side. Thank you so much, all the organizers and management of Central Academy, TT College Ajmer. Thank you so much. I feel so obliged that yes, you've given me a platform to share this experience. Professor Nagin Singh sir, thank you so much for allowing me to be here and sharing the platform with such renowned people in the field and such learned experience I had. The experiences which the industry people were sharing, that was really tremendous. Thank you so much. All the best to all the conference people who are organizing this. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am, for presenting your thoughts on the topic strengthening of industry and academia post NEP 2020 in such an elaborative and organized manner. It was wonderful listening to you. Due to some technical inconvenience, we are having some issues in connecting to our third speaker, Mr. Harendra Singh Jodha. Meanwhile, we are connecting to him. हम अपने थर्ड स्पीकर डॉक्टर प्रोफेसर हरेंद्र सिंह जोधा से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं. किसी टेक्निकल इशू की वजह से हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. मैं आप लोगों को तब तक महाविद्यालय की कुछ गतिविधियों के बारे में बताना चाहूँगी. महाविद्यालय प्रतिवर्ष
सत्र पर्यंत क्लब वाइज व हाउस वाइज विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक व खेलकूद जैसी गतिविधियां आयोजित करवाता रहा है, जिनमें एकल नृत्य, युगल नृत्य, समूह नृत्य, एकल गान, युगल गान, समूह गान, विचित्र वेशभूषा, नुक्कड़ नाटक, खेलकूद में 100 मीटर, 200 मीटर, रिले रेस, फुटबॉल, स्पून एंड मार्बल रेस, चेयर रेस, क्विज, वाद विवाद, पेपर रीडिंग, निबंध लेखन, पोस्टर, कोलाज, स्लोगन आदि कंपटीशन करवाता रहा है, जो कि छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु मार्ग प्रशस्त करता है। महाविद्यालय के प्रशिक्षणार्थी प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय व अंतर महाविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर पुरस्कार प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। महाविद्यालय की ही बीएड की छात्रा ज्योत्सना गौड़ ने सत्र 2014-15 में एमएड की छात्रा प्रेरणा यादव ने सत्र 2019-20 में विश्वविद्यालयी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। महाविद्यालय का परिणाम अब तक 100% ही रहा है तथा भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों में से 80% प्रशिक्षणार्थियों का राजकीय व अराजकीय सेवाओं में चयन हो चुका है। महाविद्यालय प्रतिवर्ष सेमिनार, वर्कशॉप एवं गेस्ट लेक्चर आदि भी आयोजित करवाता रहता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट आकर उनसे संबंधित क्षेत्र की जानकारियां बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। कैरियर काउंसलिंग व गाइडेंस के लिए भी महाविद्यालय सेमिनार आयोजित करवाकर विद्यार्थी हित की समस्त जानकारी उनको उपलब्ध करवाता है, ताकि विद्यार्थी स्वयं हित में निर्णय ले सकें। सामाजिक एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता हेतु महाविद्यालय समाज के बीच छात्रों को ले जाता है, जिसमें अक्षर ज्ञान, पर्यावरण जागरूकता, पॉलीथीन निषेध, मतदाता जागरूकता एवं ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए उनकी ज़रूरत के कपड़े, फल एवं पढ़ाई का सामान भी वितरित करवाया जाता है, जिससे विद्यार्थी समाज में रहकर हर वर्ग के व्यक्तियों के सामंजस्य के साथ एवं प्रेमपूर्वक जीवन व्यतीत करना सीख सकें एवं दूसरों के सुख दुख को भी समझ सकें। महाविद्यालय बीमारी पर भी अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करवाता रहता है, जिनमें शुगर, थैलेसीमिया, डेंटल चेकअप, ब्लड डोनेशन कैंप एवं स्वास्थ्य जागरूकता हेतु कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं विष्णु सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन दें। विष्णु सर। मंचासीन सभी अतिथियों को नमन करते हुए, जो हमारा इंटरनेशनल का टॉपिक है, उस टॉपिक पे जो हमारे गुरु हैं जयेश राजपूत सर, उनका व्याख्यान हुआ और काफ़ी वो व्याख्यान महत्वपूर्ण है हमारे दृष्टिकोण से। मैंने भी कुछ नोट किया था और एट ए टाइम प्रेजेंट करने के लिए बोला गया मुझे, तो शायद मैं उन्हीं की बात से स्टार्ट करूँगा। और मेरे गुरु प्रोफेसर नागेंद्र सिंह जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और अपना जो विचार हैं, कोई ऐसा रिटर्न भी तो मेरे पास नहीं है, ना कोई पेपर मैंने बनाया था। मेरे जो विचार है इस जो NEP 2020 है, इसके अंतर्गत जो दो चीज़ हम लेके चल रहे हैं इस सेमिनार के अंदर, उद्योग और शिक्षा, दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। और शिक्षा और उद्योग, क्योंकि जो हम देखते हैं बेसिक जो भी हमारा शिक्षा जुड़ी हुई है, वो आगे चल के कहीं ना कहीं हमारे उद्योग के लिए ही है। जो जैसा हमारे शिक्षा के जो शिक्षा का महत्वपूर्ण जो है कि हम क्या करें, यहाँ पे प्रोडक्शन मेन होता है हमारा प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन किस टाइप का होगा हमारे लिए, और वो प्रोडक्शन जाके इंडस्ट्रीज़ या जो मार्केट है उसमें उस प्रोडक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो शायद इसका जो प्रोडक्शन की कीमत है वो शायद हमारी शिक्षा ही हमें देती है। जब बच्चा स्कूल में आता है, स्टार्टिंग जब उसका होता है, वहीं से इसकी नींव स्टार्ट होती है कि हम किस तरह के
उन गुणों का विकास करें जो हमारे NEP के अंदर शायद स्टार्टिंग के फर्स्ट फेज में ही बोल दिया गया है कि मानव को सर्वांगीण विकास करना है और मानव को मानव मूल्य से रहित बनाना है इसको। तो वहाँ पर भी उसने NEP के अंदर शुरुआत के अंदर इस चीज़ को कह दिया गया है। तो बहुत बड़ा अर्थ यहाँ पर बात कही गई है कि NEP के अंदर मानव मूल्यों का विकास हमें करना है। अगर मानव मूल्य के विकास होंगे तो हमारी शिक्षा प्रणाली और जो हमारा हम बोल रहे हैं कि उद्योग जगत है, शायद काफ़ी उदाहरण आप लोगों को मिलते होंगे उद्योग जगत के भी, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो शिक्षा है वो महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी देश के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि हम शिक्षा को किस प्रकार से हम हमारे बच्चों में डेवलप करें, किस तरह से उन विचारों को हम प्रदान करें, किस तरह से उन मानवीय मूल्यों का हम विकास करें हमारे विद्यार्थियों में, जो आगे चल के हमारे देश के लिए हमारे भविष्य हैं और हमारे देश के लिए जो हमारी GDP हम बोल रहे हैं कि हमें उसको बढ़ाना है, GDP को लेके जाना है 6 तक, तो हम कैसे उसको लेके जाएंगे, उसके लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा है शिक्षा, उस शिक्षा के आधार पर ही हम इसको लेके जा सकते हैं। क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है, हमारा कंटेंट है, शायद अभी तक जितनी भी NEP बनी है, शायद मैं क्लासरूम में भी इस चीज़ को बोलता हूँ कि हमारी डिग्री और हमारा जो शिक्षा है दोनों अलग अलग है। हमारा बेसिक हम जो हमारा इंडस्ट्रीज़ है, अब चाहे वो इंडस्ट्री कुछ भी हो सकता है, हमारा एजुकेशन भी एक तरह से इंडस्ट्रीज हो चुका है। जो अब नया टर्मिनोलॉजी आ रहा है हमारे पास कि हमारी एजुकेशन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है हमारी एजुकेशन का भी। अब आप किस तरह से अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाते हैं, किस तरह से उसकी ग्रोथ करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शिक्षा को कैसे करें। जो इससे पूर्व की जो पॉलिसीज़ रही हैं, चाहे 1968 की चाहे 1986 की पॉलिसीज़ रही हैं, जितनी भी आप टेक्स्ट बुक्स को हम लेके चले हमारी प्राइमरी सेक्शंस की, तो उसमें उदाहरण किस प्रकार से दिए गए हैं। कभी आपने देखा होगा जो एग्जाम्पल कोट किए जाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक्स में, वो किस तरह से कोट होते हैं। कोई चित्र दिया गया है तो उस चित्र का कितना बड़ा प्रभाव उस बच्चे के मानसिकता के ऊपर पड़ता है। मान लीजिए हर आप देखिए टेक्स्ट बुक्स में कहाँ पर क्या दिया गया, केवल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, है ना। इसी तरीके से शायद जितने भी हाई प्रोफेशंस हैं जो हमारे व्यवसाय हैं उनको दर्शाया गया है टेक्स्ट बुक्स के अंदर हमारे। लेकिन शायद कभी इस तरह से कोई मजदूर, कोई रिक्शे वाला, कोई घर का काम करने वाला, शायद ऐसा कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? फिर वही है कि हमारी जो शिक्षा है वो केवल किसके लिए जा रही है, हमारी डिग्री के लिए आ रही है। वो कि हम चाह रहे हैं कि वो मार्केट के लिए हम उसको करें, वो मार्केट के लिए नहीं जा रही है, वो केवल डिग्री के लिए ही खत्म हो रही है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स कोड हो रहे हैं वो देखिए किस प्रकार से हो रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है हमारा शिक्षा के अंतर्गत, उस व्यवहारिक दृष्टिकोण को लेके आएँ जो मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। जो हमारी NEP बोल रही है कि आपको मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। वो मार्केट की रिक्वायरमेंट कैसे होने वाली है, आप ही सोच रहे होंगे कि केवल उद्योग, इंडस्ट्रीज़ नहीं, हमारी एजुकेशन भी एक इंडस्ट्रीज़ है। इसके लिए भी हमें डेवलप करना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्रीज़ को। अगर ये भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई तो फिर काफ़ी हम पीछे रह जाएंगे। जो हम बात NEP कह रही है कि आपको टेक्नोलॉजी के अंदर आपको बढ़ना है आगे, आपको रिसर्च एरियाज़ को आगे लेके जाना है आपको। तो काफ़ी कुछ जो हमारी NEP, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो काफ़ी कुछ नए बदलाव लेके आ रही है। और शायद आप देख रहे हो काफ़ी कुछ चेंजेस, जितने ज़्यादा चेंजेस अभी पिछले 2 या 3 साल में दिखने को मिल रहे हैं और आने वाले 2-3 साल में और इतने चेंजेस हमारे शिक्षा जगत में ही आ चुके होंगे कि हम उसके लिए भी तैयार नहीं हैं अभी, इतने फास्ट। तो इसके लिए हमें अब क्या करना होगा, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा बोल रही है, हमारे पाठ्यक्रम बोल रहे हैं, हमारी पाठ्यचर्या बोल रही है कि हमें क्या करना है अब। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सर ने बात की गई थी, कही कि 3 चीज़ जो सर ने कही थी यहाँ पर, जो कहा सेल्फ, सोशल और नेचर। 2 चीज़ राजपूत सर ने इस चीज़ को कोट किया था कि सेल्फ, सोशल और नेचर। देखिए बहुत ज़रूरी है कि जो बात की मैंने कि जो NEP बोलती है मानवीय मूल्य, अगर आपके मानवीय मूल्य अगर स्टूडेंट्स के अंदर हैं, विद्यार्थियों के अंदर अगर वो डेवलप हो गए तो आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा। और शायद अभी जब हम बोलते हैं कि हमारे एथिक्स, हमारा भारतवर्ष, शायद इसीलिए हमारी उसकी पहचान है कि हमारे मानवीय मूल्य और हमारे नैतिक मूल्य, और शायद हमारे भारतीयों के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर हम देखते हैं शायद कहीं विलुप्त हो गए हैं। तो बहुत इसको जगाने की आवश्यकता है और उसको जगाने के लिए शायद हमारा शिक्षा वर्ग, उसको ये जिम्मेदारी है कि हम कैसे उन मूल्यों को वापस से हमारे विद्यार्थियों में, हमारे समाज में कैसे आत्मसात करें हम उन लोगों को, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ की पहले सेल्फ है आपका कि
कि स्वयं देखिए कि हम कर क्या रहे हैं, क्या हमने कुछ किया है देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए या हमारे समाज के लिए। सेल्फ अपना इवोल्यूशन कर लीजिए पहले, हम क्या कर रहे हैं। सेकंड बोला था सर ने कि सोशल, तो सोशल की बात है कि जब आप अपने बारे में सोचेंगे उसके बाद ही आप सामाजिक रूप से तैयार होंगे कि आप समाज में जाए, उन चीज़ को प्रसारित करें। तो यहाँ पर जो बात की गई कि जो सोशल होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि हम कैसे अपने जो सीखा हुआ ज्ञान है उस ज्ञान को हम कैसे हम समाज में प्रसारित करें, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि शायद हम ज्ञान ही ज्ञान देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में हम कैसे लेके जाएं ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ज्ञान को अगर मान लीजिए कि आज मैंने अगर यूट्यूब चलाना सीख लिया है या गूगल मीट चलाना सीख लिया है, तो ज़रूरी है कि मैं दूसरे लोगों को भी सिखाऊं। यही आपकी सोशल जो आपके वैल्यूज है ये हैं आपकी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ज्ञान को प्रचार करें, उसका एक्सटेंशन करें हम। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। नेचर जो बोल रहे हैं कि आपका जो वातावरण है, उस वातावरण को, जब सोशल की बात करी आपने, तो उस वातावरण को ऐसा क्रिएट करें, जो पूरा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के अंदर आप लेके जाएं कि आप इस एनवायरनमेंट को ऐसा बना दें कि बच्चे ऑटोमेटिक ही उसमें सीखें। जो शायद 4 पिलर की बात की सर ने, राजपूत सर ने, वो बहुत यूनेस्को के जो 4 पिलर हमें दिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और वो 4 पिलर ये शायद जो बोल रहे हैं कि बच्चा अपना आप सीखे। हम क्या करते हैं, हम स्पून फीडिंग करा रहे हैं, शायद सर इसके लिए काफ़ी बोलते हैं कि स्पून फीडिंग मत कराइए बच्चों को, उनको सीखने दीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस वातावरण को ऐसा क्रिएट कर दें कि बच्चे अपने आप सीखें, और अपने आप जब सीखेंगे तो मान के चलिए जो उनकी लर्निंग है वो बहुत इफेक्टिव होने वाली है, और वो इफेक्टिव लर्निंग ही कहीं ना कहीं जाके आगे हमारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत सफलता देगी। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़ को भी मानना कि जैसे मान लीजिए कि पंचर वाला है, आपकी गाड़ी पंचर हो गई या गाड़ी ख़राब हो गई आपकी, आप रास्ते में आ रहे थे तो आपने सोचा कि चलो इस मैकेनिक से ठीक कराता हूँ। आपने मैकेनिक से ठीक कराई, गए उसके पास, तो उसने देखा, बोला आपके तो भैया इतना खर्चा होगा, आप दे दीजिए 1000 रुपये, ठीक हो जाएगी। आपने 1000 रुपये भी दे दिए, लेकिन वो गाड़ी ठीक नहीं हुई। किसी दूसरे से कराया, आपने जाके बोला भैया कुछ नहीं होता, इसके अंदर तो केवल प्लग ही था, वो उसको साफ़ किया, बोला 20 रुपये दो, ये लो। अब दोनों जो डिफरेंसेस क्या हमें दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्या दिखा रहे हैं? और शायद यही चीज़ हमारे शिक्षा के अंदर भी हो रही है, हमारे पेशे के अंदर भी ये चीज़ आ गई है, और बहुत ज़्यादा हो रही है हमारी शिक्षा के अंदर। जो पहली बात थी जो पहली बात थी कि यहाँ पर स्किल्स, सर ने भी जो 3 वर्ड्स यहाँ पर दिए थे, शेप, स्पीड, स्केल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि जब दोनों जो आप एक कार्य करते हैं, शायद स्किल्स की बात की गई वहाँ पे, जो भी NEP बोल रही है हमारे कि स्किल्स आप बच्चों में डेवलप करें, अपने आप में डेवलप, टीचर होने के नाते हम भी अपने डेवलप करें और हमारे बच्चों के अंदर भी वो स्किल्स डेवलप हो यहाँ पर। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो दोनों कारीगर आपने देखे उसके पास स्किल्स थी, दूसरी बात पैसा भी लिया आपने, दिया उसको, और आपकी गाड़ी भी ठीक नहीं हुई। तो वही एक्सीडेंट हमारे साथ भी हो रहा है प्रेजेंट में। तो इसलिए कि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो जो NEP बोल रही है कि बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है स्किल्स के ऊपर, तो हम कहीं ना कहीं शिक्षक होने के नाते हम अपनी स्किल्स में हम डेवलप करें, हमारी सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स जो हैं, हमारे टेक्नो पेडागोजिकल स्किल्स, इतनी स्किल्स हमारे पास हैं कि हम सोच भी नहीं सकते एक टीचर होने के नाते, और हम केवल वही परिप्रेक्ष्य, वही परिपाठी में अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आगे जो मेरे साथी हैं और जो आने वाले मेरे टीचर्स साथी हैं वो भी, कि हम अपने आप में हमारी जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को डेवलप करें। सबसे पहली बात, अगर आपकी, क्योंकि इंडस्ट्रीज ये बोलती है कि स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप आगे जो इंडस्ट्रीज उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी शिक्षा जगत को हमें डेवलप करना है तो हमें अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, और एक स्केल के साथ एक शेप देनी है, एक स्पीड देनी है, और एक स्किल के साथ, तीनों के साथ हमें लेके चलना पड़ेगा उन स्किल्स को, तभी हम इस इंडस्ट्रीज़ को और हमारे शिक्षा जगत को हम फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
Thank you, sir, for such an understandable and easy analysis of our today's seminar. Moving further, I would take privilege to introduce our international speaker, Mr. Harendra Singh Jodha. He is a British educationist, writer, and the presenter of Themes. Speaks on TV 711. He is graduated from Regional Institute of Education, Ajmer. Completed his Masters in Chemistry from Udaipur and in Education from Hertfordshire. He has served as an associate head of 6th form and AH of chemistry. He also had important roles in connecting with students in various organizations. Presently, he is working with Chrysalis Multi Academy Trust in Horrow, where he is playing various important roles. Also, his chemistry lessons are featured on AQA exam board. We welcome you, sir. All hear me? Yes, sir. Okay. Thank you, everyone. And it's very, very good morning from here, but I know it's good afternoon in India at the moment. I'm sorry I may be late. I hope you will accept my apologies. Topic of this particular seminar is very apt, and the lady who introduced me was so kind. I personally, I believe I don't have all those capabilities and maybe those positive characters which she mentioned. But as a student of science and as a teacher of science, I personally believe this is a journey which we all are doing at the same time with the same pace. And maybe we may be in different places in this journey. So in this today's topic, I will add a few points, and I hope everyone will enjoy all these things. I will request tech team. Can you see my PowerPoint presentation? Tech No, team, can you no, see sir. my? No, sir. Okay, just give me a second then. Can you see the PowerPoint now? No, sir. Yes, sir, it's visible now. Okay. Today's topic is basically about industry and academia, and I carefully thought about industry and academia. There are a lot of different thought schools behind industries and academia. Probably once upon a time, East or eastern part of the planet was leading this academia, and maybe after industrialization, the western part of the planet is leading this planet at the moment. But maybe at some point, industry and academia should come together, and I will just share a few things which maybe we are reading a lot of books, maybe PhD theses, research projects, we discuss with various people, but I will just share my personal experience, which I have experienced with various people. So in today's session, I will basically focus on a brief introduction, what are the primary goals of this meeting, maybe 2-3 case studies, what are the different areas where India can grow, and a summary. So I will start this session with one of the finest picture, which I can simply say, I used this picture in 2000. I was a student, and when I look back and see, in the open sky, there's a galaxy. In the galaxy, you will see thousands of stars. You will see sun, you will see moon, and all those stars. But as a student, I believe, when I see in the galaxy, I always find a Venus. Venus will always remain there. It will be a shining star. You can always recognize the Venus. For me, the Venus is Professor J.S. Rajput, who was director of NCRT when I was a student in Ajmer Regional College. And yesterday, when I was going through all those memory lanes, then I found this picture, and I thought I should definitely share this with, because maybe those moments has led the foundation what we are today. So when I was going through the brochure, I was thinking about various aspects, but I picked a few keywords which I will share with you guys. We are looking for a multidisciplinary, flexible curriculum which can give lifelong learning, which can create global citizen, and it should develop a holistic education. These are the few keywords which I picked from NEP document and few other brochures.
And this is basically an idea. A lot of people, those who believe, how can we develop a multidisciplinary, flexible education system in the world? I think one of the finest thing which I have seen, that's called work experience. So I'm just sharing my own experience. Hopefully it will be useful for all of you. Work experience, which I think NEP has also accepted. In Western world, if you'll go to any country, work experience is a key aspect of each and every school. Every child who is in their GCSE, means who is in board exam for year 10, they have to do work experience. It may be 1 week of work experience, or it may be 2 weeks experience. And what exactly they do, every child will enroll. It's a voluntary position. They do not need to, they will not be paid in this position, but from school environment, they will go to the different setups. Where exactly they go? They normally go to dentists, lawyers, solicitors, they go to banks, they go to medicines, they go to hospitals, they go to even shops. They go to pharmacy, they go to different sets, maybe even IT companies, police, MI6. And what do they do there? They will go, they will work there as a young person. They will learn a lot of skills in those 7 days and maybe in 14 days. And every work experience will be scrutinized, it will be chased, it will be followed up. Different teachers and community members, they will take feedback from the employers. Students, they have to apply for these work placements. It means they have to create their CV. They have to go for interviews. If they do not meet their professional standards and professional criteria, they have to leave that workplace. So that's a matter of shame for that particular volunteer. But what exactly it does? In the age of maybe 14 or 15, they learn one of the finest life skill that in real world they cannot survive if they will depend on theoretical knowledge. They have to gain practical knowledge. They have to become street smart. They have to learn the language of money, and they need to know how to make money. In this particular part, there are different sorts of jobs which I can label. Different banks, be it American Bank or HSBC, JP Morgan, or maybe McKinsey or Ernst Young, or different media houses, different law firms. Every firm allow them to do all these work experience. So this is one of the first experience for all those students, those who are doing their GCSE or maybe a 10, that they come in contact with the real world. When I look back, when I see there's a huge contrast in terms of India. Once upon a time, Indian students used to do a lot of practical work. If someone is barber, his son will already pick up his skills. If someone is carpenter, his children will pick up their skill. But I think maybe in the last 30, 40 years, I have noticed people started hating their own traditional roots of learning because we started picking a modern world. And in the modern world, we lost a lot of things. And this is one of those aspects. So, जो next part है, जो picture है, जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, वो बहुत बेहतरीन है, जो शायद जिंदगी में लोगों को, बहुत कम लोगों को नसीब होती है, और वो है कि करियर चेंज. जो हमने इंडिया में देखा, मोस्टली ये होता है कि जो करियर आपने एक बार चूज कर लिया, जो 23 to 28 के बीच में जो आपने लाइफ में एक बार डिसाइड कर लिया, वो हमेशा हमारे साथ रहता है. मीन्स जब तक हम 60-65 साल के होकर रिटायर होते हैं, तब तक वो करियर हमारे साथ रहता है. लेकिन शायद वेस्ट में इंडस्ट्रीज के फ्लेक्सिबिलिटी के कारण और एकेडमिया के सपोर्ट के कारण, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल. एंड मैं इसीलिए शायद आज की इस थीम का सबसे मेन जो डिस्कशन करना चाहूंगा वो इसी के आसपास है कि एकेडमिया का इतना जबरदस्त सपोर्ट है कि जिस आदमी ने फर्स्ट 5 years एज ए बिल्डर काम किया हो, मीन्स मजदूर काम किया हो, वो नेक्स्ट 5 year में हो सकता है म्यूजिशियन बन जाए, या फिर नेक्स्ट 5 years में वो सॉलिसिटर बन जाए या डॉक्टर बन जाए. इस तरह का करियर चेंज बहुत सिंपल है, और मैंने खुद ने नोटिस किया. मेरे आसपास जितने लोग हैं वो करियर चेंज के अंदर, शायद हर आदमी अपनी लाइफ में 2 या 3 या 4 बार करियर चेंज करता है. और ये मैंने देखा कि इंडिया से एक बहुत कंप्लीट डिफरेंट ट्रेंड है. उसका रीजन क्या है? जो आदमी आज, जैसे बीइंग अ टीचर, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक जॉब कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन मुझे लाइफ में मौका मिला, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे 3 महीने एक ट्रेनिंग लेकर मुझे सॉलिसिटर बनना है,
So academia will support, it means different universities and colleges, they run a program. I will just enter through SQE exam. जिस दिन मैंने SQE एग्जाम पास कर लिया, I will become a solicitor और I will become a वकील. और शायद ये फ्लेक्सिबिलिटी एकेडमी क्या है जो इंडस्ट्रीज की डिमांड के ऊपर सप्लाई प्रेजेंट करती है. और जो टोटल आज का जो प्रेजेंटेशन है या सेमिनार है, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सप्लाई और डिमांड हमेशा उसका डायनामिक्स चेंज होता है. डेफिनेटली इंडस्ट्रीज की डिमांड है, एकेडमिया को उसके हिसाब से सप्लाई करनी चाहिए. पर कई बार ऐसा होता है कि शायद इंडिया के अंदर या भारत के अंदर बहुत सारे इंजीनियर्स की जरूरत है, पर हमने इतने सारे इंजीनियर पैदा कर दिए. मैं ऐसा मानता हूं कि इवन राजस्थान में ऐसी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनके अंदर शायद 2 स्टूडेंट्स का एडमिशन और एनरोलमेंट. उसका रीजन ये है कि हम डिमांड को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हमने इतने सारे इंजीनियर्स बना दिए, वो भी अनस्किल्ड इंजीनियर्स. ठीक वैसे ही टीचिंग में टीचर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, बट हमने टीचर्स इतने जनरेट कर दिए बट वो स्किलफुल नहीं है. सो एकेडमिया के 2 रोल हो सकते हैं. पहला रोल तो ये कि वो उस डिमांड को समझे जो इंडस्ट्रीज जनरेट कर रही है टाइम के साथ. सेकंड, एकेडमिया का ये रोल हो सकता है कि वो स्किलफुल सेट लोगों को क्रिएट करे, ना कि डिग्री होल्डर लोगों को. मैंने जब यदि हम इंडिया दुनिया में देखें तो शायद इंडियंस के अंदर डिग्री लेने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है. मींस ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट डॉक एंड पीएचडी. इसके होल्डर्स आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट क्या एक्चुअल में वो उस स्किल सेट के लोग हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. रिसेंटली मैं किसी एक नाइजीरियन इन्वेस्टर से मिला, तो नाइजीरियन इन्वेस्टर ने बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने क्या कि हम स्कूल क्यों जाते हैं? यदि हमें आज ये पता चले कि हम 20 साल बाद हमारी फाइनेंशियली लाइफ इंडिपेंडेंट होगी, हमारी फाइनेंशियली लाइफ मैं कह सकता हूँ स्ट्रांग होगी, तो क्या हमें स्कूल जाने की जरूरत है? हम क्यों 15-20 साल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपना टाइम वेस्ट करें, जिसके कारण हमें फाइनली वापस उसी साइकिल में, जिसे कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट या फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी में आना पड़ता है. उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. उसने कहा फाइनल क्वेश्चन ये था कि नाइजीरिया में यदि ये पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का कोर्स करने के बाद जब मैं 10 इंजीनियर्स को बिठाता हूँ, हार्डली एक आदमी ऐसा होता है जो एक वेब पेज क्रिएट कर सकता है. सो क्या वैसी एजुकेशन जरूरी है जो अनस्किल्ड लोगों को बनाती है? जैसे नर्सेस की भयंकर डिमांड है दुनिया में, बट वी डोंट हैव स्किलफुल नर्सेस. ज्यादातर नर्सिंग में जो लोग आए हैं, वो नर्सिंग कोर्स करने के बाद जब वो कहीं काम शुरू करते हैं, तब उनमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज आती है. मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं कि 3 साल का जिसने आईटी के अंदर या डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर कोर्स किया, 3 साल के बाद जब वो बाहर निकलता है, तब तक उसे कुछ नहीं पता होता है. जो कुछ उसने 3 साल में सीखा, हो सकता है कि वो 7 डे के एक रिफ्रेशर कोर्स में या एक फोर्टनाइट के एक ट्रेनिंग कोर्स में वो सब कुछ सीख जाए. तो वो 3 साल का टाइम और 3 साल का रिसोर्स क्यों खराब करना, इस पे एजुकेशन को सोचने की जरूरत है. शायद एनईपी ने इसको एड्रेस करने की बहुत अच्छी कोशिश की. आई रेड द डॉक्यूमेंट्स. सो चेंजिंग करियर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको केस स्टडी देता हूं. आई थिंक हो सकता है कि जो स्क्रीन पे देख रहे हो, शायद लॉर्ड करन बिली मोरिया को जानते हो. लॉर्ड करन बिली मोरिया के फादर इंडियन आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल थे, और 1971 वॉर और बाकी के वॉर्स में इन्होंने बहुत अमेजिंग काम किया. और ये बेसिकली इंडियन है. इंडियन में भी ये पारसी ओरिजिनेटेड है, आई थिंक. और सब लोगों को पता होगा जोरोस्ट्रियन एक रिलीजन है. पारसी लोग गुजरात के एक छोटे से टाउन में आए थे और उसके बाद बॉम्बे तक फैलते गए. ये पारसी हैं, अब ये लंदन रहते हैं. जब ये हार्वर्ड और बाकी यूनिवर्सिटीज में पढ़े, खुद में भी शायद कई जो यंग स्टूडेंट्स जो अभी देख रहे हैं, उनको लगता होगा कि लॉर्ड करन बिली मोरिया कहीं ना कहीं ऐसी जगह लिंक है. वो है वेस्टर्न वर्ल्ड में यदि किसी ने कोबरा बियर पॉपुलर की, तो ये लॉर्ड करन बिली मोरिया थे. कोबरा बियर को उन्होंने एक छोटी बॉटल में पैक करके, क्योंकि इंडिया की जो बॉटल की साइज है बियर की, इट्स टू बिग, उन्होंने एक छोटी बॉटल में से पैक करके पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के हर रेस्टोरेंट में, हर इंडियन रेस्टोरेंट में, हर करी हाउस में इन्होंने उसको सेल किया और कोबरा बियर को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया. ये इनकी बिजनेस स्किल थी. बट सरप्राइज आप देखेंगे कि बिजनेस ही व्हेन ही बिकेम सक्सेसफुल, ही बिकेम मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स. अभी ये जैसे इंडिया में राज्यसभा है, वैसे ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं. बट ये थी इनकी इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट.
यहाँ के एकेडमिया ने इनकी इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट को समझा और दे अपॉइंटेड हिम एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। सो जब मैं उनसे मिला लास्ट मंथ तो ये इस चीज पे डिस्कशन था कि जो इनके लाइफ का अचीवमेंट है वो अचीवमेंट था, इन्होंने इंडिया से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट की और पूरे यूरोप में बेची। फाइनली बिकेम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। सो इनका इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट बहुत जबरदस्त था, इसीलिए इनको एकेडमिया ने कहा कि यू शुड बिकम चांसलर ऑफ द बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, जिससे आप बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से बहुत सारे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को जनरेट कर सकें। क्या ये एक फैसिनेटिंग स्टोरी नहीं है? शायद दिस इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री, कि जो लोग एकेडमिया में बहुत स्ट्रांग हैं, हो सकता है पॉसिबली दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन इंडस्ट्री बैक। इंडिया के पहले जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे रघुराम राजन, he was highly successful in his professional career, but again he went back and he started teaching. So ये जो free flow है between academia and industry, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि शायद this is a deadly combination, और this is what world is looking for. मैं एक दूसरा केस स्टडी आपको शेयर करना चाहूंगा। ये है अनिल जी अग्रवाल। He is basically from Rajasthan and he is also hardcore Marwari. When I spoke to him 2 months ago, then he mentioned that every year he takes on board around 250 people on internship in different fields. So जो students जिन्होंने graduation किया है, किसी भी field में graduation किया है, उनको ये internship पे लेते हैं, और 6 months या 12 months के internship program के बाद then when they learn skills, they are free to go anywhere. If they want to continue in their Vedanta, they will allow. But if they want to go to different aspects, or maybe if they want to go to the banking, if they want to go to the even painting, or they want to go for designing and technology, they are free to go. ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर एकेडमिया और इंडस्ट्रीज दोनों कंबाइंड एफर्ट है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि रिसेंटली जो चिप्स बनाने का जो इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है इंडिया में, वो अनिल जी अग्रवाल ने डाला है। इनकी भी लाइफ स्टोरी फैसिनेटिंग है। मैं खुद भी मानता हूं कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बट बिना एकेडमिया कैसे सक्सेसफुल है। बीइंग ए केमिस्ट मींस केमिस्ट्री सब्जेक्ट से मैं हूं, मैं ऐसा सोचता हूं कि जो आदमी जिन्होंने कभी मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं जाना, मैं खुद को केमिस्ट्री का होने के नाते मानता हूं कि मुझे डिफरेंट केमिकल्स के बारे में पता है, या डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पता है, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पता है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, हाउ मेटल्स कैन कन्वर्टेड इनटू कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड सुपरकंडक्टर्स। बट जब मैं अनिल जी के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है उन्होंने कभी केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, उन्होंने कभी केमिस्ट्री के इन प्रॉपर्टीज के बारे में जाना नहीं है, बट स्टिल ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मेटल किंग इन द वर्ल्ड। उसका रीजन ये है, ये खुद एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बट ही हैज हायर्ड टीम दोज हु आर वेरी गुड इन एकेडमी। सो जहां दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो, वो चीज बहुत सक्सेसफुल है। और ये मेरा एक रीसेंट एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ वेदांता का एग्जांपल नहीं देना चाहता, हो सकता है ऐसी थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हो जो ये विप्रो भी हो सकती है, ये इन्फोसिस भी हो सकती है, ये अब्रॉड की आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट हो सकती है, ये गूगल हो सकती है। एवरी कंपनी विल हायर पीपल, दे विल ट्रेन देम, एंड आफ्टर ट्रेनिंग दे विल से यू हैव फील फ्री टू गो। जैसा कि गीता के 18 चैप्टर में लिखा है कि आपने सारे योग सीख लिया, लास्ट में उन्होंने लिखा यत इच्छसि तत् कुरु, मतलब अब आपकी जो इच्छा है आप वो करिए। जो ज्ञान कृष्ण ने कहा कि मुझे अर्जुन को देना था दे दिया, लेकिन अब आप वो करिए जो आपकी इच्छा है। नेक्स्ट एस्पेक्ट हो सकता है कि शायद जो फोटोज हैं, मैं पूछना चाहूंगा जो पार्टिसिपेंट है इनमें से कितने लोगों को लोग जानते हैं? कोई बता सकता है जो पार्टिसिपेंट है, या फिर मे भी जो टेक्निकल टीम है वो पार्टिसिपेंट से पूछ के बता सकती है कितने लोगों को जानते हैं इनमें से? Anyone from technical team or maybe who is present there can tell me out of these 8 people, how many people you can recognize? Any reply? Any participant? वैसा सॉरी शुभम, कितने Yes. कितने लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं?
Apple CEO Steve, and I think Facebook and Twitter owner, and Bill Gates is, and Bill Gates, and that lady I also know. What's her name? I know that lady. That is Steve. EV Steve. And yeah, Steve Jobs, and I know that lady also. What's the name? Yeah, that lady also. I know the name of the lady. I know that much, yes. ठीक है, thank you. We may not know all these people, but you know one of the beautiful thing about all these people is either they are school dropouts or they are college dropouts. Maybe out of these 8 people, 5 people, they have never been to school, or maybe they have not done their year 10. Few people, they just went to college, they left the college, they really couldn't survive in the atmosphere of the college. Maybe about Steve Jobs, I can say he took admission in one of the course and he couldn't survive. So he used to go and learn calligraphy, means how to write properly with a good handwriting. ये इस तरह के सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी हमें क्या बताती है? एक चीज पे हमें सोचने को मजबूर करती है कि क्या स्कूल और कॉलेज वो चीजें दे पाने में सक्षम है जो आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरत है. और ये एक बहुत बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है. ये बर्निंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जो स्कूल और कॉलेजेस का जो करिकुलम है वो इंडस्ट्री की और मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांड से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. इसीलिए जो चीजें हमने स्कूल में सीखी, मुझे कई बड़े स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो चीजें हमने स्कूल में सीखी उनका कहीं रियल लाइफ में कहीं यूज नहीं. तो ऐसा इसका क्या बड़ा रीजन हो सकता है? इसका रीजन यही है कि एकेडमिया को कहीं ना कहीं ये चेंज करना पड़ेगा या एक फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी कि जिस चीज की डिमांड है उस चीज की डिमांड के हिसाब से पढ़ाया जाए. और जो ये एग्जाम्पल है, मे बी द सेकंड लेडी ओपरा विनफ्रे, मे बी जो बच्चियां जो मेरे को सुन रहे हैं वो इसके बारे में रिसर्च करें कि इनकी लाइफ की स्टोरी कैसी रही है और हाउ शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीवी प्रेजेंटर इन यूएस एंड इन मे बी इन द वर्ल्ड आल्सो, ओपरा विनफ्रे. सो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने, हो सकता है कि ये 8 फोटोज हो, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, बट ये चीज थॉट प्रोवोकिंग है कि क्या एकेडमिया, यदि ये एकेडमिया को फॉलो करते तो क्या ये सक्सेसफुल लोग होते, और यदि ये सक्सेसफुल नहीं होते तो एकेडमिया को इस तरह के क्या चेंजेस करने चाहिए जिनसे फ्यूचर में इस तरह के सक्सेसफुल लोग इन्हें मिले जो एक बहुत अच्छी मैं कह सकता हूं कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करे दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने. अब इसके बहुत सारे तरीके और रास्ते हैं जिसके ऊपर मैं शेयर करूंगा आपसे, और वो है स्किल गैप का. जैसा मैंने पहले कहा था कि डिमांड्स एकेडमिक इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत है. यदि आप डिमांड देखेंगे तो मैंने कहा था कि नर्सिंग की डिमांड बहुत है, बट वी डोंट हैव स्किलफुल नर्सेस. पूरी दुनिया में स्किलफुल टीचर्स की इतनी डिमांड है जो हायर सैलरी पे, हायर सैलरी रेंज पे, मींस जिनकी ऐसे टीचर्स जिनकी सैलरी शायद 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ हो, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है बट उनकी सप्लाई बहुत कम है. डॉक्टर्स की डिमांड है पर उनकी सप्लाई बहुत कम है. बिजनेस एनालिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है पर सप्लाई कम है. सो ये जो स्किल का गैप है, शायद वो जो नया एनईपी डॉक्यूमेंट आया, आई थिंक वो इसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है. ये एक मेरा एक्सपीरियंस है जिसको मैं शेयर करना चाहूंगा. ठीक वैसे ही रिसेंटली फार्मा इंडस्ट्रीज हैं. हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर इस तरह की मेडिसिन से जो डेवलप हो चुकी हैं या फिर नहीं हुई है. लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत एडवांस लेवल की मेडिसिन हैं, वो डेवलप हो गई हैं, वो अप्रूव हो गई हैं, बट वी आर नॉट एबल टू यूज बिकॉज वी डोंट हैव दोज स्किलफुल पीपल जो उनको क्या कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते. अभी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने एक नया कॉन्सेप्ट लिया है जो शायद इंडिया में भी कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ले सकते हैं, और वो ये है कि जो जिस यूनिवर्सिटी में जिसका जो सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज है उन्होंने वहां लोकल किसी इंडस्ट्रीज से पैक्ट कर लिया, और industries will fund, universities will generate their research paper and both will flourish.
और ये शायद इसी का नतीजा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो नई चीजें हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो मान लीजिए वैक्सीन है, being a proud Indian, I can say कि we have supplied vaccine to 70 countries. But in actual में हमने किया क्या? जो वैक्सीन है वो डेवलप एक्चुअल में इट वाज डेवलप्ड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. हमने उसको सिर्फ कॉपी करके रिप्लिकेट करके उसको सेल किया. सो क्या हम उस स्किल सेट के लोगों को जो वैक्सीन को डेवलप कर सके, नई वैक्सीन को बना सके, क्या हम उसको सस्टेन करवा सकते हैं? और वहां ये क्वेश्चन आता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जिन कंपनीज ने फाइनेंस लगाकर बहुत सारा पैसा देकर यूनिवर्सिटी से उन सारे लोगों को रिक्रूट किया जो इस चीज को बना सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज द कनेक्शन बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज विच वी कैन डू. अब फ्यूचर में और व्हाट एल्स वी कैन डू? We can do many things. We can create hubs, we can create innovator spaces, we can create incubation spaces. There are a lot of cyber coffee space in the world जहाँ दुनिया के लोग बैठते हैं, वो हमेशा इस चीज का डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सी नई चीज जनरेट करनी चाहिए. इंडिया फिफ्थ, यूके की जो इकोनॉमी है उसको उन्होंने सरपास कर दिया. ये यूके से बड़ी इकोनॉमी होगी रिसेंटली. तो क्या एक बड़ी इकोनॉमी जो दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है, क्या उसको इतना डाइवर्स नहीं होना चाहिए कि वो मॉडर्न जितने भी फील्ड आ रहे हैं उसके लिए वो स्किलफुल लोगों की एक फौज तैयार करे जो नई नई चीजों को जनरेट करे? हम कई बार सुनते आए कि इन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत एडवांस है. उसका रीजन ये है कि वो हमेशा ये देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल रूट्स के अलावा जो मॉडर्न रूट्स हैं उसको कैसे फॉलो करें. मेरे जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या खोया है? मैं कभी जब बैठ के सोचता हूँ, आई थिंक इट्स अ साइकिल. 100 years ago लोगों के अंदर, या मे भी एक इंडियन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर इंटर्नशिप करने के लिए आपको किसी कंपनी में अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी. लोग ट्रेडिशनली अपने बच्चों को अपना कामकाज सिखाते थे और वो हमसे आज की मॉडर्न पीढ़ी से ज्यादा एडवांस होते थे. बट हमने एक वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट लिया कि नहीं, स्कूल इज द ओनली एस्पेक्ट. हमने उसको इतना फोकस किया कि शायद हम जिंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स को समझना और उसके ऊपर बोलना भूल गए. मैं एक सेकंड पॉइंट है जो एक चैलेंज है इस इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच का. वो चैलेंज ये है कि इंडिया ने लास्ट 10-15 years के अंदर वन ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ बॉन्डेड स्लेवरी इज IT जॉब्स इन इंडिया. वहां जाने का टाइम आपको पता है ऑफिस का, लेकिन ऑफिस से वापस घर आने का टाइम आपको नहीं पता होता है. सो हमने लाखों करोड़ों IT इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को पैदा किया. इवन उन लाखों करोड़ों में से हजारों लाखों अब्रॉड आते हैं. दे आर हाईली सक्सेसफुल. दे आर पीपल जो पर डे उनकी रेट है लगभग डेली बेसिस दे आर अर्निंग 1.5 लाख रुपीस डेली बेसिस, उनकी जॉब रेट्स हैं. बट उनके साथ लाइफ में एक हमने इंडिया में एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दूसरी क्रिएट कर दी. वो है दे आर ट्राइंग टू बिकम ग्लोबल सिटीजन बट दे हैव लॉस्ट their spiritual mind somewhere. Maybe they have lost the purpose of their life somewhere. Education का काम है एक holistic development, developed human being बनाना. मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम काम और स्किल के पीछे इतना हो जाते हैं कि we become like a धन पशु. और धन की इस भागदौड़ के पीछे हम इतना भागते हैं कि जो एक holistic human being का एक डेवलपमेंट होता है या उसका एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, शायद हम उसे भूल जा रहे हैं. सो मेरा आज का समरी का इतना ही है कि जो कोई आज इस NEP के प्रोजेक्ट से लोग आए, कम से कम ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी इस तरह के कोर्सेज क्रिएट हों जिसके अंदर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ये 11 और 12 की जो यहाँ की इंडिया के हिसाब से जो क्लासेस हैं उनके अंदर कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप बायोलॉजी, साइकोलॉजी और ड्राइंग 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं. यू कैन लर्न केमिस्ट्री, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी. ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी का जो फ्लेक्सिबल जो मोड है, ऐसा मोड डेवलप हो. लोगों का एक सबका एक अलग अलग तरीका है. मुझे लगता है कि हर आदमी के अंदर 1000 आदमी होते हैं. उस हजारों आदमियों की एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट का एक मोड ही एजुकेशन है. उसको एक विशेष सांचे और खांचे में डालने वाला नहीं, बल्कि उसको ओवरऑल एक डेवलपमेंट करने वाला एक मोड है एजुकेशन. ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैं शेयर करना चाहता था. और नेक्स्ट, as I said earlier, the second person who also influenced me in my life, maybe you can recognize, maybe he's sitting with you at the moment,
ये मेरी क्लास की फोटो थी कहीं, maybe you can find me somewhere, but I can see in the front someone is sitting with the red ties, Professor Nagendra Singh. I will especially thank to him. He is like a guru to me, who's changed my views and who has shaped my vision and thoughts as well. So thank you, all those people, maybe Central Academy Education Society, Ajmer family, all the participants, and any question, please feel free to ask me now. Any questions? Thank you so much, sir. We are grateful to listen to you and the various life experiences and international experiences shared by you in today's session. We hope the important points mentioned by you are surely going to help us in our upcoming career opportunities. Once again, thank you, sir, for connecting with us today. Thank you, Thank you, Priti. everyone. When we don't have questions, it means there are two things. Either people learned everything or they learned nothing. So I will just go with this confusion, but still thanks a lot to everyone. Thank you. थैंक यू सर. थैंक यू कृति. अब मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं डॉक्टर उर्मिला शर्मा मैम को कि वे मंच पर आकर वोट ऑफ थैंक्स दें. गुड आफ्टरनून. आप सभी की इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति के लिए आभार, धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन व्यक्त करती हूँ. सबसे पहले मैं सम्मानीय प्रोफेसर JS राजपूत सर को धन्यवाद देती हूँ. उन्होंने अपने अमूल्य समय दिया और मूल्यवान समय से हमें ज्ञानवर्धन किया. हमारी संस्था का सबसे अच्छा सहयोग है कि उन्होंने अपनी उपस्थिति इस समय दी. अब मैं प्रोफेसर नागेंद्र सर को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और हम सब के लिए अमूल्य समय एक मूल्यवान उपहार स्वरूप है. अतः आप हमेशा इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहिए सर. अब मैं प्रोफेसर हरेंद्र सिंह जोधावत सर को धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस इंटरनेशनल सेमिनार में अपना सब ज्ञानवर्धन समय दिया और हमारे लिए सम्मान की बात है. अब मैं प्रोफेसर नीतू मैम शुक्ला मैम को धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना ज्ञान साझा कर ज्ञान मार्गदर्शन किया. अब मैं KC मीना सर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस सेमिनार में अपना अमूल्य योगदान दिया. अब मैं श्री मनोज शारदा सर को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपना मूल्यवान समय इस सेमिनार में दिया. अब मैं श्री नरेंद्र सिंह सर का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपने ज्ञान द्वारा हमें अनुग्रहित किया. मैं अब सम्मानीय अध्यक्षा महोदया डॉक्टर शोभा सुमन मिश्रा मैम का आभार व्यक्त करती हूँ कि इस कार्यक्रम में एक प्रकाश की किरण के रूप में विद्यमान है और जिन्होंने हमें इसके लिए प्रेरित किया. धन्यवाद मैम. इसी तरह हमें आगे भी करते रहिए. अब मैं सचिव श्री आरुष TN मिश्रा सर का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन किया. धन्यवाद सर. आप इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहिए. अब मैं नेहा मैम का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया. धन्यवाद मैम. अब मैं हमारी प्राचार्य मैम डॉक्टर वर्षा नाल मैम का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को में हमें सफल बनाने के लिए निर्देशित किया. आगे मैं डॉक्टर भागचंद सर, मेरे साथीगण एवं छात्र सहभागी सभी को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया. अतः आगे मैं डॉक्टर रागिनी मैम एम कृति को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि इस कार्यक्रम में उन्होंने सहजता से तथा मधुर वाणी के द्वारा संचालित कर सफल बनाया. थैंक यू मैम. थैंक यू उर्मिला मैम. उर्मिला मैम के वोट ऑफ थैंक्स के साथ ये सेमिनार अब अपने समापन की ओर जा रहा है. ये ज्ञान श्रृंखला अब यहीं समाप्त होने वाली है. इस समय हम सभी
कुछ सुखद एवं दुखद अनुभवों से गुजर रहे हैं। सुखद इसलिए क्योंकि जी मैम सुखद इसलिए क्योंकि जिन हस्तियों से, जिन शख्सियतों से हमारा मिलना संभव नहीं था, आज हमने उन्हें सबको अपने सामने देखा भी और उनके विचार भी सुने। और दुखद इसलिए कि ये ज्ञान श्रृंखला यहीं समाप्त होने जा रही है। मैं इस अवसर पर कार्यक्रम के समापन की ओर जाते हुए राष्ट्रगान के लिए सभी को खड़ा होने के लिए कहती हूँ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे,